हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे ऑडी A6 के बारे में। दिस इज़ दी वर्जन फ्रॉम 2012। सो स्ट्रेट अप, लेट्स ओपन द इंजन बे। सो दिस इज़ पावर्ड बाय अ V6 जो कि बनाता है आपकी राउंड अबाउट 178 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। पीक टॉर्क कम्स अराउंड एट 4000 RPM। सो दिस इज़ अ डीजल इंजन एंड बिकॉज इट्स अ डीजल इंजन, इसमें इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ दी गई है। तो हाइड्रोलिक सेट्स भी दिए गए हैं बिकॉज दिस इज़ अ रियली बिग हुड। And these are the seat controls of the car. So if you want to talk about the seats बहुत ही अच्छे से वेल bolstered हैं and they have nice lumbar support as well as under thigh support. You can change the lumbar support from this button right here. You can also change the height of the seat, and this is for the backrest. And there is a multi information display given here, and these are the light controls. Paddle shifters भी दिए जाते हैं इसमें as seen here, and this is the gear shifter of the car. We'll come back to it in just a second. Now let's move back and check out the trunk. So one thing to notice about this does have the trunk controls mounted on the car key. Press this here and the trunk opens, but there is no trunk close button from here. You have to manually close the trunk. These are LED lights, of course. Now let's move to the back seat. Back seats are also really nice. They are not adjustable from here, but tab bhi they do provide a nice level of comfort. Now let's close the armrest. And I'll just demonstrate you how to fold down the seats. There's a flap given here. So you can see this is a 40-60 split. दूसरा पार्ट उधर से होता है. So this is a 40-60 split. Now let's talk about the back door. This is the speaker, of course. तो इसमें कोई स्पीकर का ब्रांड एज इन नहीं है. These are Audi made and brushed aluminum door handles. Tweeter here. So this is a small compartment for you to keep your stuff. One touch windows. Press this once, the window goes down. Press this again and the window goes up. And nice big nets given here to keep your stuff. Now as opposed to the Range Rover Sport, iski door pockets, they are really large and comfortable. You can keep all your stuff and large water bottles won't be an issue. इसमें कोई वेंटिलेटेड सीट्स तो नहीं है. आई थिंक 2012 में व्हेन दिस व्हीकल वाज मेड, बैक सीट वेंटिलेशन वाज नॉट अ वेरी प्रेवेलेंट थिंग. एंड दिस इज़ द ड्राइवर व्यू यू विल गेट फ्रॉम बैक साइड. एंड द विंडोज डू हैव सनशेड्स, इससे आपको प्राइवेसी मिलेगी. नाउ दिस व्हीकल हैज़ डोम लाइट्स ऑन द बैक फॉर बोथ द पैसेंजर्स. And now you can see in this the sunroof is not a panoramic one. This is a normal sunroof. ये पीछे तक एक्सटेंड नहीं होता है. Panoramic sunroofs are those जो कि आपके पीछे तक आए till the headroom. Now if you want to talk about the headroom, so this vehicle does have a really good headroom. I am 6 feet exact and मेरे ऊपर there are still couple of inches left. So that is also a good thing. Now we want to keep in mind कि this is mainly a chauffeur driven car. आप इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे. Mostly your driver will carry you around. So this is in that respect a nice place to be in. Now the AC vents are given here as well as here. तो दोनों तरफ से you get the airflow. You can control this of course from here. So airflow is not an issue here and you won't feel claustrophobic in this vehicle.
Now let's hop on into the front passenger seat and check it out. Now as you can see, same brushed aluminum here, and this also has lock and unlock buttons given on the co-passenger side. Now one thing to mention, इसमें आप अगर देख सकते हैं there is a chrome line here जो कि extend करती है all the way till there. मतलब this creates a nice sequence जो कि same है throughout the cabin. You can see ये same chrome line यहाँ से शुरू होकर वहाँ जाती है. Wood finish given here. Now one more cool thing of this interior, you can see this display. ये जो है आपका when you close the car goes off. The button is given here. You press this and the display goes inside. So this is also really nice thing. यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है. This is really neat. So when you don't need it, ये चला जाता है. But when you need it, you just press this button, put this into ignition, और ये आ जाता है. Let's close this for now. और यहाँ पे आप देख सकते हैं the glove box है. It's nice and big, and there is also a CD changer given here. पता नहीं किसको यहाँ पे छुपा के रखा है. But I guess back in 2012 they did what they had to do. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं these are the controls for the display. I'll just show it to you right now. ये जो dial है इससे you change the various menus. You can see I'll rotate this dial. अब यहाँ से ये का change होता है. And this is for back, this is for menu, and this is your car information. This has 4 drive modes: comfort, automatic based on how you're driving it, and individual. Now this individual mode will tailor the vehicle suspensions and everything to what you want. For example, if you want the steering wheel to be nice and hard, you can set it to sports mode, but you want the suspensions to be soft, not on the harder side, so you can set it to comfort, and the transmission can also go into sport if you want it to. Now that all can be done from here, this individual screen. Now this has a normal Steptronic transmission. Now I will just drive it in some time to show you the shifts and everything. Paddle shifters I mentioned, I think, are given here, and you can also shift from here. Now this has electronic parking brake, and this is for various media presets. For example, the radio presets. This, whichever channel you want to, you can set it from here. In start stop button given here, and this is the volume control, and this is seek and back. This is radio, this is media, and there is a cigarette lighter given here. Now this goes off if you wanted to show. Just press this, ये आ जाएगा. Cigarette lighter given here. This is to place the key. You can keep it here safe because this car does have keyless entry and keyless go. I'll just show it to you, and I think both the driver and the front passenger have request sensors to open the car. Now the steering wheel has these controls given here, and this one on the left side is to control the MID. I'll just demonstrate it to you when I go there. Now I think I've gone through everything. Now this does have storage space here, cup holders, and in this compartment also this as well as this. Now this has 2 storage spaces. First one is this, and second one was inside. Now I'll just hop onto the driver's seat and show you the driver side of things. So as I did mention that request sensors are on front as well as the co-passenger on the front, but I was wrong. The request sensors are on all 4 doors, and I don't know why the request sensors don't seem to work on this vehicle, but to make them work you just have to press this button while the key is in your pocket. So we just leave it at that now. Now let's hop inside the car and check it out. Now this is the multi-information display. To turn on the car, the key is in my hand. I'll just place it where it belongs right now, inside this, and we close this. To turn on the car, just press this,
and your foot of course should be on the brake pedal, as is mine. Now just press and hold and the car comes to life. Now this has a CD player right here. I think I forgot to mention. Now this does have tire pressure monitoring systems, and this says that the tire pressures are wrong inside the vehicle. So this is how you will control the multi-information display given here. Now this is the car memory, and these are the odometer readings. Now this display right here is called the multi-information display, or MID. Now I think in my previous review I called all of the displays MID. Now that is wrong. MID is only this screen. Now let us take an example. If this instrument cluster was as whole a display like in the new Audi cars, then this would not have been called an MID. An MID is a display between two physical gauge clusters. So MID is this one. Now the horn, there is no party trick with the horn. The horn is simple. Just press this and the horn sounds. The horn is super loud. I will just close this. There is no branding on these speakers, but I counted them. These are all in about 12 speakers, 2 subwoofers on the back and tweeters given here. Now two speakers given here, and the parking brake is here. You just push it up to engage it, and when you want to disengage, just push it down and the parking brake light goes. You can also set it to auto hold. Now auto hold is something that is really helpful when you are in traffic. For example, if I go to a street light और मुझे चाहिए कि भाई गाड़ी मेरी रुक जाए, मैं नहीं चाहता इसको पार्किंग पे लाना, मैं चाहता हूँ ड्राइव पे ही रहे लेकिन रुक जाए, तो आई जस्ट सेट इट टू दिस, और अपने आप जब गाड़ी चलेगी तो व्हेन यू ब्रेक इट, अपने आप वो गाड़ी वहीं रुकी रहेगी. इट विल होल्ड इटसेल्फ. आपको वापस पार्किंग पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज़ अ रियली गुड फीचर. नाउ इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट द पार्किंग एड्स, तो यू कैन सी दिस इज़ अ पार्किंग सेंसर बटन. यू जस्ट टॉगल इट ऑन एंड पार्किंग एड शोज़. अब इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट एज वेल एज बैक पार्किंग सेंसर्स हैं. अब भाई गाड़ी पुरानी है, मे बी ये ख़राब हो चुके हैं, तो हाउ डू आई नो देयर राइट. तो यू कैन सी दिस ऑन द राइट साइड शोज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर आप यहाँ पे देखें देयर इज़ अ पिलर है, तो सही है, दे डू फंक्शन. और ये स्क्रीन की मैंने बहुत कम बात करी थी, तो जस्ट सी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में आप देख सकते हैं पहले तो ये है आपका बटन जिससे आप चेक कर सकते हैं वेरियस मोड्स. तो यहाँ पे आपकी फ्यूल की ये प्रेडिक्शन है कि कितनी चलेगी. नेक्स्ट वी गो, दिस इज़ टू चेक इफ़ देयर आर एनी एरर्स इन द व्हीकल. कोई मान लीजिए कमी है या कोई दिक्कत है, तो 2 ही कमी दिखा रहा है, एक तो टायर की एंड द सेकेंड वन फ्यूल. नाउ दिस इज़ द रेडियो लिस्ट. दिस इज़ द कनेक्टेड डिवाइस. अगर आप ब्लूटूथ से पेयर करेंगे दिस विल डू शो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है. नाउ अगर हम नीचे जाएं तो दिस इज़ दी मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी. फॉर एग्जांपल लास्ट ट्रिप में आप कहाँ गए, तो दिस इज़ दी शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये आपकी चली जाएगी व्हेन यू क्लोज द कार. अब ऊपर जाएं तो दिस इज़ करंट कंजम्पशन, और ये चली नहीं है मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते से, तो कंजम्पशन नहीं दिखा रहा है. ऊपर जाएँ तो दिस इज़ डिस्टेंस कवर, इतना ही चली है ये सिंस लास्ट रीसेट. एवरेज स्पीड भी दिस वोंट शो. ड्राइविंग टाइम एंड डेट. नाउ दिस इज़ दी लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपकी स्टार्टिंग से होती है. दिस इज़ दी ट्रिप दैट यू वांट टू एंगेज. ये आप रीसेट करनी पड़ेगी आपको. शॉर्ट टर्म मेमोरी रीसेट अपने आप होगी. लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको खुद से रीसेट करनी पड़ेगी. और जो परमानेंट मेमोरी है लाइक द ऑडोमीटर रीडिंग, दिस इज़ 56,000, ये नीचे शो करती रहेगी टेम्परेचर एज वेल एज टाइम. तो गलत ही दिखा रहा है. नाउ दिस डज हैव अ मैनुअल कंट्रोल फॉर द डिस्प्ले स्क्रीन. यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बटन, और आप ये दबाएं तो यू कैन टॉगल इट ऑन एंड ऑफ. ये तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है. मान लीजिए आपको नहीं चाहिए कि दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग योर व्यू, या आपको नहीं ज़रूरत इसकी, जस्ट प्रेस दिस एंड दिस गोज़ ऑफ. नाउ इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स, तो यू कैन सी देयर इज़ अ स्मॉल फ्लैप गिवन हियर. इसको आप नीचे करिए एंड द स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल फॉर बोथ रीच एज वेल एज हाइट. नाउ द वन शॉकिंग थिंग इज़ इसमें ये चीज़ जो है ऑटोमेटेड नहीं है, दिस इज़ मैनुअल, तो आपको ये खुद ही से करना पड़ेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सनरूफ कंट्रोल्स. तो अगर मुझे सनशेड हटाना है तो ये तो मैनुअल हुआ आपका, आपने हटा दिया. अब मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी हवा आए, तो
पार्शियल खोलना है तो आई पुश इट अगेंस्ट माई सेल्फ, तो ये पार्शियल खुल गया पीछे से। अब मुझे चाहिए कि ये पूरा खुले, तो आई जस्ट क्लोज इट एंड आई पुश इट बैक, तो ये खुल गया आपका सनरूफ। तो यू विल गेट द एयरी फीलिंग। ये बंद हो गया आपका अगेंस्ट से। नाउ देयर आर 2 mics given here to control and these are the vanity mirrors given here, okay, as well as on the passenger side same with the light। ये आपने खोला तो लाइट अपने आप जल गई। Now I think this sums it up। तो right now we're driving the Audi A6। Now the V6 motor packs quite a lot of punch। अब इसमें 380 Nm का टॉर्क है। Right now we're driving in dynamic mode, तो this is quite sporty। gearbox भी है जो अभी sports mode में है, तो the shifts are aggressive। और कोई ऐसी शिकायत अभी तक तो नहीं है, बस एक ये शिकायत है कि below 2000 RPMs ये थोड़ी सो सी जाती, तो right after 2000 RPM it packs that punch। वो पंच जो है 2000 RPM के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं आता। तो आई थिंक दिस लैग इज़ क्वाइट कॉमन बिटवीन ऑडीज ऑफ दैट एरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट राइट नाउ इट्स आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द कार दैट्स दिस ओल्ड एंड स्टिल प्रोवाइड्स सच अ थ्रिलिंग ड्राइव। These paddle shifters are not that responsive। Now this is a 7-speed transmission। Economy rating जो है around 17 km/lit है, which is quite good। मतलब कई ऐसी normal हमारी sedans जो होती हैं वो नहीं दे पाती, for example Volkswagen and other Audis, जैसे BMW की X1 ले लीजिए आप या फिर X3 ले लीजिए, तो they are also around 13 to 12। तो this is good। तो the right way to do this would be bringing the vehicle to a stop, turning off the traction control, left foot on the brake, right foot on the accelerator, let it rev till 2000। there is quite a lot of wheel spin, but it just moves effortless। Now let's move to the normal mode। For that you have to press this option car right here and then go to comfort। Now these are the comfort settings। Now if you want to talk about the outside visibility, so these side mirrors, they are big enough, and this mirror right here also, this provides quite a bit of visibility। Or let us toggle the cruise control। You push the small bar right here towards yourself and the cruise control turns on। This is how you turn the cruise control। It shows stabilization program on, so right now it's on cruise control। Now we do need to mention that this cruise control isn't adaptive, so it won't slow the car automatically down seeing the other vehicle in front of it, but tab bhi this is the normal cruise control। So you can see here 70 kilometers it's written, it just went away। Now see 69 kilometers an hour। So and there is a small logo here which says cruise control। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो we just push this up and speed increases 80, 90, 100। Now if you want to talk about the speakers, so they are actually really good। They create a surround sound kind of thing, but I can't play any songs due to copyright issues, but believe me they are really good। Right now we're in sports mode, so I'll just turn the traction control off, and in the Audis it is not called traction control, it says stabilization program। So that is also a nice thing, something unique।
So yeah guys, I forgot to mention the auto hold thing which I wanted to demonstrate. तो for example I'm driving right now, तो auto hold यहाँ पे देखिए बंद है, this is not blinking. I'll just press this and auto hold turns on. तो for example भाई मैं ट्रैफिक में हूँ, I'll just wait here. तो मैंने इधर रोका and the car is in drive, पर I didn't touch the handbrake और ये देखिए पार्किंग पे है. अब मुझे अगर आगे बढ़ानी है तो I won't touch that, बस I'll just press on the accelerator and the auto hold does the rest. अपने आप गाड़ी छूट जाएगी. तो this is how auto hold works. So overall I'd say this car is actually good. I think it was ahead of its times in many things. अपने वक्त से काफ़ी आगे थी ये गाड़ी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस. मतलब ये कॉन्सेप्ट कि आप जब चाहें अपनी स्क्रीन को सामने से हटा दें, तो दिस इज़ समथिंग रियली नीट जो आई थिंक a lot of other car manufacturers should implement in their vehicles. Now I think guys this is it, so we'll just end the video here because I think it's getting too long. But for any other further improvements, do leave a comment and do like, share and subscribe. Your support means the world to me. Thank you guys, thanks for watching.